Hey everyone, this is Shrujita Roy and welcome back to my channel. I have recently joined LPU to pursue my BSc Agriculture degree, and here are the list of things which is needed to be carried by you if you're gonna live in a hostel. I mean, obviously, either you're gonna opt for a hostel or for a PG. So, here are the things I bought. First, you're gonna start with tops. If you are a girl, you need to bring a lot of tops because you'll be joining LPU in the month of August and it's gonna be very hot. Then you'll also need घर पे पहनने वाले कपड़े. So here I'm packing some of my shorts, my trousers, and then we move on to kurtis and dresses because LPU is a very vast कम्युनिटी कैंपस एंड वहाँ पे लेजिट सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. तो कुछ टॉप्स, कुछ कुर्तीज़ विथ मैचिंग ट्राउजर्स विद देम, और कुछ अगेन फ्रेशर्स हो गया या फिर कुछ कॉन्सर्ट हो गया. सो यू नीड ड्रेसेस फॉर दैट. सो अकॉर्डिंगली मैंने ड्रेसेस भी पैक कराए हैं. या यू कैन सी कुछ 6-7 ड्रेसेस एंड कुछ 4-5 कुर्तीज़ मैंने पैक किए हैं अलॉन्ग विद देयर मैचिंग ट्राउजर्स. And here I'm packing the home wear, some kurtis, some tops, some trousers, pants, some shorts, and very comfy cotton tops for the summers and the long full pants and for the winter season. देन मूविंग ऑन टू जीन्स आपको कम से कम 3 to 4 पेयर्स कैरी करने ही पड़ेंगे. सिंस मेरा एग्रीकल्चर डिग्री है, मेरा जीन्स बहुत जल्दी गंदा हो जाता है. एंड जो लॉन्ड्री है वो इट टेक्स अराउंड 8 to 9 days टू रिटर्न योर क्लोथ्स. सो यू विल नीड मैनी क्लोथ्स. सो इट्स बेटर आप घर से ही कैरी करके ले जाओ. देन आई एम पैकिंग माई लैब कोट. आई बी नीडिंग दिस. यू कैन बाई इट फ्रॉम देयर इट सेल्फ, बट स्टिल मेरे पास था तो मैं कैरी कर रही हूँ. नाउ कमिंग ऑन टू विंटर क्लॉथ्स. सिंस मैं ऐसे टाइम पे जा रही हूँ जहाँ पे आई बी रिटर्निंग होम इन दिसंबर, तो मुझे गर्मियों के कपड़े भी चाहिए रहेगा और ठंडियों के कपड़े भी चाहिए रहेंगे. तो आई बी पैकिंग बोथ. हियर आई एम जस्ट ऑर्गेनाइजिंग ऑल माई टॉप्स इन माई ट्रॉली. Now, don't forget to carry your masks. I know COVID is gone, but still there is a few chances. And then comes to curtains. I'm carrying curtains. You can either buy it from there itself, but still मैं carry कर रही हूँ for safe side. आप भले नॉन AC room choose कर रहे हो या AC room, you need to get yourself curtains. Then I'm packing bed sheets, pillow covers. यहाँ मैंने 2 बेडशीट्स पैक करे हैं. आप लोग सिंगल बेडशीट्स पैक करें, मैंने ये गलती की थी, मैंने डबल बेडशीट पैक करी थी. देन आई एम कैरिंग सम बुक्स फॉर माई फ्री टाइम. हियर आर सम बुक्स. And here I'm just organizing all the curtains, bed sheets, pillow covers into my trolley. मैंने फुट मैट भी कैरी करी है, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं. नाउ आई एम पैकिंग सम फूड, सम स्नैक्स. सिंस वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, मैंने ये सब फालतू का ही कैरी किया था. बट स्टिल आप अगर लाइक नए हो वहाँ पे, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट प्लेस, सो यू कैन कैरी सम स्टफ. लाइक आई हैव कैरीड ग्रीन टी, फ्रूट लूप्स, लॉटे चोको पाई, some biscuits, and all the snacks. I've also carried mayonnaise and chocolate spread. Then comes hangers. Hangers are very important, you need to carry these. Then some sanitary pads. आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, but for the safe side you can carry. Then I'm carrying some cloth clips. ये सब वहाँ पे मिल जाएगा, बट सिंस मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो आई बॉट ऑल दिस यहाँ से ही. अगर आपने लॉन्ड्री भी ऑप्ट करी, इट्स ऑलमोस्ट ऑफ नो यूज़, तो आप मेक श्योर यू कैरी ऑल योर स्टफ अकॉर्डिंगली. You can carry all of these things, Scotch Brite to clean your utensils like the small plates and kettles, soap bars, face washes, detergent. Then hair care stuff like shampoos and conditioner. Make sure you carry a rope with you. Can also buy it there to, आप balcony में लगा सकते हो आपके
वेट कपड़े, गीले कपड़े सुखाने के लिए। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स फाइन, आप इतना लगेज कैरी कर सकते हो, बट लाइक अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वेट का ध्यान रखें, जो अलाउड पैकेज वेट है सूटकेस का वो आप ध्यान रखें, बिकॉज़ मेरा ज़्यादा हो गया था एंड आई हैड टू पे 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज़ मैंने इतना सारा सामान कैरी किया। एंड देन लेटर वहाँ पे पहुँचने के बाद आई रियलाइज़ ये सब वहाँ पे भी मिल जाता है, सो इट वाज ऑल अ वेस्ट। I'm carrying a notebook. I could have bought it from there again, but still I'm carrying one. Towels, hand towels. Then comes makeup ka saman. Obviously, if you're a girl, you'll be needing few stuff. Don't forget to carry your sunscreen. It's very, very important. Hair serum, makeup brushes, and all the stuff you usually use. I'm carrying this small vanity bag in which I've packed all my makeup ka saman. Don't forget to carry all your undergarments, innerwears, and everything. I'm carrying all this in a Ziploc bag so it stays put. As I said, LP is a city in itself, तो वहाँ पे अंदर आपको यूनी मॉल मिल जाएगा, यूनी हॉस्पिटल मिल जाएगा, हर हॉस्टल के नीचे टक शॉप्स मिल जाएंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपको वहाँ से ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा. सम स्टेशनरी विच यू कैन ऑल्सो बाय इट फ्रॉम देयर. Then I'm carrying my handbags which I'll be needed in the college. I'm carrying 3 handbags, some elastic bands, your specs, don't forget your specs, and all the extra stuff that you'll be needing. Like I got a plushie and then just packing it all together. I also bought a few what is it called, few boxes, lunch boxes, but not the containers basically. And then you got to pack some medicines, some sprays, ointments for cramps and stuff. There's a uni hospital campus के अंदर ही, so you can also buy it from there, but it's better कि आप यहाँ से carry करें आपके important चीज़ें. And then some junk jewelry for again occasions which होते रहते हैं campus के अंदर. Then I'm carrying my crockery like spoons and forks, बट अगेन आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, बट अगर आपके पास है घर पे ऑलरेडी आप वहीं से लेके जा सकते हैं. सिंस आई एम इनटू व्लॉगिंग एंड यूट्यूब, आई एम ऑल्सो कैरिंग माई ट्राईपॉड. हियर इज़ एन इलेक्ट्रिक केटल, एन आयरन बॉक्स, माई चप्पल्स, होमवेयर चप्पल्स. यू ऑल्सो नीड टू कैरी दीज. आपको इलेक्ट्रिक केटल अभी या फिर बाद में ख़रीदना ही पड़ेगा, सो इट्स योर विश, आप यहाँ से ख़रीदें वहाँ से. अ मग, heels, my personal care like perfume, deodorant. I am also carrying soap cases, a mug, you can also buy it from there. And don't forget your vitamins, it is very important. Then I'm carrying 2 saris with me just in case, but I don't think you need saris, you can just carry one. Then again a chappal, and do not forget thread needle. And here are some medicines. As I told you earlier, you need to carry all these. A hot water bag, it's better to be cautious अब यहाँ से घर से ही. And a tape just in case. And here is the final look of my room, hostel room. My mom dad set up all the things in my room जब मैं orientation में थी तब. I also carried a lamp, yes. These are all my pastime books. ये मेरा टेबल है, ये जो पिंक कवर है ये मेरे मॉम डैड ने चढ़ाया है. एंड दिस इज़ माई रूम, दिस इज़ माई सिंगल बेड. आई ऑप्टेड फॉर अ 2-seater रूम, 2-seater AC रूम. एंड दिस इज़ द एंटायर रूम. मेरे रूममेट्स तभी नहीं आए थे, तो द बाजू का बेड एज यू कैन सी इज़ एम्प्टी, एंड दिस इज़ द AC, एंड दीज आर द कर्टन्स. यू विल बी नीडिंग कर्टन्स बिकॉज दिन में आपको धूप से प्रोटेक्शन चाहिए रहेगी. So this was all about what to pack in LPU. And plus one more thing, there are no restrictions on what to wear, तो make sure आप comfortable clothes carry करें. आप जैसे भी जिस भी clothes में comfortable आप वही पहने. I hope you found this video useful, and if you did, please don't forget to like it and subscribe it. And please let me know in the comment section what more type of LPU videos you want on my channel. Thank you for watching. Bye bye.